In this video, I'm going to share some tips, put a look together, what to wear on ethnic wear, on what occasion, what to wear, and I will tell you some points that will help you to dress up in any ethnic wear outfit. सेम वीडियो मैंने बनाया था फॉर वेस्टर्न वेयर्स, पर दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एथनिक वेयर. सो अगर आपको इंडियन ड्रेसअप होना पसंद है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, तो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द first thing that everybody should keep in mind, that quality of the fabric matters a lot. So आप जब भी कोई फैब्रिक बाय करने जाओ या फिर आप सलवार हो या फिर आप रेडीमेड भी खरीदने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ये जो कोई भी कुर्ती आप जो भी आप खरीद रहे हो उसकी फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा हो. लाइक सिल्क, शिफॉन आर वेरी गुड ऑप्शंस फॉर एथनिक वेयर्स, एंड इन द अदर हैंड pure cotton is very good for ethnic hairs, and the other hand wool and velvet are bit bulkier fabrics, but they are also be worn in winter wears, so they are also important. But in this video I'm just talking about the cotton, mostly cotton dress, because I'm wearing right now a cotton kurti which have very good print, and I have added red color chunni for adding some color to it, and I have accessorized also. Accessorizing is important ethnic wear. Without accessorizing, it's incomplete. Pure cotton is better for prints and fabric. Dressing up for occasion for ethnic wear is a bit tricky, so it can be very confusing what to wear on what occasions. Starting with the business events and casual gatherings, इस पे आपको बहुत ही elegantly dress up करना है. Make sure you wear neutral colors and be comfortable, wear comfortable dresses. Focus on the outfit colors. A lot of people will ignore this phase, but outfit colors also matter. I will tell you, if you are warm undertone skin color, you should wear colors like mustard, yellow, olive green, orange. If you have a cooler skin tone color, you should wear blue, lavender. But if you have in between neutral skin tone color, you can wear anything and everything. Like me, I have neutral skin tone color, not too warm, not too cool, so I can wear any color that will suit me. But if you are warmer skin tone, choose warm colors. If you are cooler skin tone, choose cool color. Talking about is hairstyling, it is also important for ethnic wears also. So how to choose hairstyle and what dresses? If you have this question in mind, I will tell you. Focus on just neckline. Just do open hairs like this, and try to add hair accessories or any accessories in your outfit, and you will look good. If you have u-neck or collar, you can do braids and do sleek ponytail, and you can also do buns if you're wearing a sari. So try to use accessories pretty much basic but also very classic. Right fitting. So right fitting of your ethnic wear is very important. If you are wearing too loose or too tight dress, you will not look attractive. In fact, you will not be comfortable in any type of ethnic wear if it is too tight or too loose, right? Your pictures also will not come correctly. Keep this point in mind. If you want to look good, your ethnic wear fitting should be in your shape. Next point is accessories. I have just told you that accessories are important. Without accessorizing, your ethnic wears are incomplete. So not even just jewelry. You can add bags, you can add a juti, footwear, and hair accessories, whatever you like. Keep a little pieces like pendant, earrings, hoops, and bracelets to complete your outfit. And make sure they are silver and gold plated jewelries that will mostly go on any outfit you are wearing in ethnic wear. Next point is for makeup. So कैसा makeup करके जाए, right? ये हमें हमेशा confusion होता है. तो अगर आपने कुर्ती या नॉर्मल कैजुअल गैदरिंग्स के लिए कुर्ती नॉर्मल एथनिक वेयर पहना है, सो आप बहुत ही न्यूट्रल और नेचुरल मेकअप करके जाओ. इफ the occasion is demanding for it, then only you should put a dark lipstick or a smoky eye like I did today. You can keep pieces like jhumkas and necklace to complete your makeup. And don't forget that you should use your shade of foundation, not too light or not too darker, वरना आपका मेकअप जो है ग्रे हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा. And don't forget to put mascaras and kajal. There is a must for ethnic wears. वो आपकी eyes को बहुत ही अच्छा उभारेगा.
फुटवेयर इज़ थॉरली इम्पोर्टेंट फॉर एथनिक वेयर्स। तो वो आपके एथनिक वेयर को फुल लुक अच्छा देगा अगर आपका फुटवेयर आपकी आउटफिट या आपकी कुर्ती के कलर के साथ मैच हो। एंड मोस्टली वेयर जूतीज सिल्वर और गोल्डन के एक पैर आप रखो, वो सब सब आउटफिट एथनिक वेयर्स के साथ चला जाएगा। अगर आपको हील्स पहनना पसंद है तो मेक श्योर कि आप ऐसे हील्स चूज़ कर रहे हो जो सेम टाइम कंफर्टेबल भी हो और स्टाइलिश भी हो। तो उसके साथ भी वही है कि आप कलर्स को मैच करने की कोशिश करोगे तो वो अच्छा ही दिखने वाला है। तो हमें डिटेल्स पे और अच्छा ध्यान देना है कि आपकी आउटफिट में कोई भी रिंकल्स ना हो और रिंकल फ्री आउटफिट आप चूज़ करो, बाय करो। स्पेशली कॉटन जो है वो बहुत अच्छे से रिंकल फ्री होते हैं। मेक श्योर कि रिंकल फ्री होनी चाहिए आपकी आउटफिट, आप आयरन कर सकते हो बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस। एंड ऐड सम बिंदी, वो अच्छी लगती है फॉर एथनिक वेयर। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं ऐसी वीडियोज़ हर वीकेंड लाते रहूँगी। सो बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।